lesson we learned about, that we use comparative adjective to compare two things. Example, Samsung devices are easier to use than Micromax devices. A superlative adjective expresses the extreme or highest degree of a quality. We use a superlative adjective to describe the extreme quality of one thing in a group of things. Example, Samsung devices are the easiest to use. We use a superlative adjective to describe one thing in a group of three or more things. Look at these examples. Canada, China, and Russia are big countries, but Russia is the biggest. Mount Everest is the highest mountain in the world. So we are talking about superlative degree. So a superlative degree or superlative adjective expresses the extreme or highest degree of a quality. ठीक है, जो हाईएस्ट होती है. कंपैरेटिव में हमने कंपेयर किया था और यहाँ पे हम हाईएस्ट डिग्री बता रहे हैं. ठीक है, सो वी यूज अ सुपरलेटिव एडजेक्टिव टू डिस्क्राइब द एक्सट्रीम क्वालिटी ऑफ वन थिंग इन अ ग्रुप ऑफ थिंग्स. तो फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास बहुत सारे टॉयज हैं, बट मैं कहती हूँ कि मेरा जो बेस्ट टॉय है वो ये है, फॉर एग्जाम्पल. तो ऐसे ही जब ग्रुप ऑफ थिंग्स, ग्रुप ऑफ पीपल में से हम एक इंसान को एक्सट्रीम हाई लेवल पे दिखाते हैं, वहां पे हम सुपरलेटिव डिग्री यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं, मेरी फैमिली में सब लोग लंबे लंबे हैं. ऑल द मेंबर्स ऑफ माई फैमिली आर टॉल. ठीक है, बट माई फादर इज द टॉलेस्ट पर्सन इन द फैमिली. तो मैं ग्रुप ऑफ पीपल में से किसको बता रही हूँ हाईएस्ट? माय फादर. ठीक है, ही इज ऑन द टॉप पोजीशन, मींस ही इज द टॉलेस्ट पर्सन इन द फैमिली. सो टॉलेस्ट क्या हो गई? टॉल की सुपरलेटिव डिग्री हो गई. टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट. ओके, we use a superlative adjective to describe one thing in a group of three or more things. So guys, please remember, comparative degree हम दो लोगों के, दो चीजों के बीच में यूज करते हैं. तीन से ज्यादा, दो से ज्यादा कौन हो गए? तीन. तीन से ज्यादा, तीन और चार, 5, 10, 50, 100, इनमें हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं. Look at these examples. Canada, China and Russia are big countries. ठीक है, तो मैं तीनों को बिग बोल रही हूँ, तीनों की क्वालिटी बता रही हूँ. दे आर बिग. ठीक है, बिग क्या है मेरा? पॉजिटिव और बेस फॉर्म है एडजेक्टिव का. बट रशिया इज द बिगेस्ट. तीन चीजें हैं, तीनों में सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है? रशिया. सो रशिया इज द बिगेस्ट. नेक्स्ट, माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड. कल हमने माउंट एवरेस्ट को बाकी माउंटेन से कंपेयर किया था. दैट माउंट एवरेस्ट इज हायर देन अदर माउंटेन्स. अब यहाँ पे हम उसे किसी से कंपेयर नहीं कर रहे, हम क्या बता रहे कि भाई वो सबसे ऊंचा है दुनिया में. सो माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड. तो गाइज, सुपरलेटिव डिग्री में हम EST लगाते हैं, और जिनमें दो से ज्यादा सिलेबल्स होते हैं वहां पे मोस्ट लगाते हैं. ठीक है, तो हाई, हायर, हाईएस्ट. एनी क्वेश्चंस? Whiter. Don't know, ma'am, what happened with my phone. If don't rejoin the class, I would be able to see anything. Still not working. Okay, so guys, any questions from this slide? I believe no. So let's quickly move to the next slide. Someone please read quickly. Formation of superlative adjectives. As with comparative adjectives, there are two ways to form a superlative adjective. One, short adjectives add EST. Second, long adjectives use most. Remember, we usually add the at the beginning.
वेरी सिंपल गाइस, फॉर्मेशन जैसे मैंने अभी आपको बताया, हम सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स में EST लगाते हैं, सो यहाँ पे भी हम EST का ही यूज कर रहे हैं. सो शॉर्ट एडजेक्टिव्स एड EST एंड लॉन्ग एडजेक्टिव, जो वर्ड जैसे ब्यूटीफुल हो गया लॉन्ग वर्ड है, गॉर्जियस हो गया लॉन्ग वर्ड है, हैंडसम लॉन्ग वर्ड है, तो यहाँ पे हम मोस्ट लगा देते हैं. एंड रिमेंबर वी यूजुअली का मतलब क्या है, हमें ज्यादातर एड द एट द बिगिनिंग. You are the most beautiful girl in the world. Mount Everest is the highest mountain in the world. Burj Khalifa is the tallest building in Dubai. ठीक है, so the का लगाना हमारा जरूरी है. Next slide. Someone please read. Rule of creating superlative adjective: single syllabic words add est to the word. Example: strong to strongest. Remember that it is sometimes necessary to double the final consonant. Typically, if the word is a single syllabic words ending with a consonant sound, double the last consonant. Example: big to biggest. Single syllabic word ending with an e only add st. Example: fine to finest or rare to rarest. Double syllabic words ending with y, change the y to an I and add est. Crazy to craziest and silly to silliest. 2-3 syllabic words use most or least. Example includes most desirable and least expensive. Yes, ma'am. So guys, we are talking about rules for creating superlative adjectives. So बहुत simple rule है. We are using single syllabic words. Syllable क्या होता है, जिसपे stress आता है, और हम जैसे word में beautiful, इनको जब हम ऐसे करके बोलते हैं, उसमें जो ये जोर आता है और वहां पे थोड़ा सा पॉज आता है, उसको हम syllable बोलते हैं. ओके, सो जो सिंगल सिलेबिक वर्ड होते हैं, जिसमें सिर्फ एक सिंगल सिलेबल होता है, जैसे बिग. बिग में हम कहाँ रुक रहे हैं, एंड में ही आके रुक रहे हैं, तो इट्स लॉन्ग, एक ही है, तो इसमें हम EST लगाते हैं. ठीक है, लॉन्गेस्ट, बिगेस्ट. ठीक है, सो सिंगल सिलेबिक वर्ड्स एंडिंग विद एन ई ओनली एड ST. सो गाइस, जहां पे E एड हो रहा है वहां पे सिर्फ ST ही एड होगा. फॉर एग्जाम्पल फाइन, फाइनेस्ट, रेयर, रेयरेस्ट. डबल ई नहीं होगा. ठीक है, क्योंकि ई ऑलरेडी इन वर्ड्स के पास है, तो हम सिर्फ ST ऐड करेंगे. नेक्स्ट, डबल सिलेबिक वर्ड्स एंडिंग विद वाई. मैंने आपको कल भी बताया था, जो वर्ड्स वाई पे एंड होते हैं, जो एडजेक्टिव्स वाई पे एंड होते हैं, वो आई से चेंज हो जाते हैं. ठीक है, नेक्स्ट, फॉर एग्जाम्पल आपके सामने क्रेजी, क्रेजीएस्ट, सिली, सिलीएस्ट. 2 और 3 syllables वाले जो वर्ड्स होते हैं, उनमें हम मोस्ट और लीस्ट लगाते हैं. मोस्ट सबसे ज्यादा के लिए, लीस्ट सबसे कम के लिए. फॉर एग्जाम्पल, माई फादर अर्न्स द मोस्ट इन आवर फैमिली एंड आई अर्न्स द लीस्ट इन माई फैमिली. ठीक है, सबसे ज्यादा, सबसे कम. नेक्स्ट स्लाइड, समवन प्लीज रीड. With some two-syllable adjective, we can Amitan, use your voice is not. Someone else please read. With some two syllables adjectives, we can. What? Arey Ajmol, she is reading. Yes, Sifat, go ahead. With some two syllable adjectives, we can use both est or most. Example: quiet, the quietest, most quiet; clever, the cleverest, most clever; common and commonest, most common. All right, so with two syllables, जैसा भी मैंने बताया, जो syllables होते हैं adjectives में, we can use both. For example, quiet है, उसके साथ आप quietest भी use कर सकते हैं और most quiet भी use कर सकते हैं. Clever, the cleverest. For example, Fox is the cleverest
एनिमल, और आप मोस्ट क्लेवर भी यूज कर सकते हैं. फॉर अनदर एग्जाम्पल, कॉमन, द कॉमनेस्ट, मोस्ट कॉमन भी बोल सकते हैं. For example, the most common meal in India is dal chawal, or the commonest meal in India is dal chawal. Right? Next, please read. When we compare one thing with itself, we do not use the. Example, England is the coldest country in the world. Yes. England is being compared to other countries, hence the has been added before coldest. However, England is coldest in winter, not the coldest, because here England is being compared to itself. Example 2. My boss is most generous when we get a big order, not the most generous, because here we are comparing the boss's behavior when he gets a big order with his behavior in other situations. Alright, so when we compare one thing with itself, जब हम एक चीज को उसी से कंपेयर करते हैं, तब हम द का यूज नहीं करते. द का यूज हम जब करते हैं जब हम किसी चीज को और चीजों से बता रहे हो. जैसे द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, तो बहुत सारी गर्ल्स है, उसमें से मैं आपको बोल रही हूँ यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल. ठीक है. नेक्स्ट इज इंग्लैंड इज द कोल्डेस्ट कंट्री in the world. England is the coldest country in the world. So यहाँ पे मैं इंग्लैंड को किससे कंपेयर कर रही हूँ? बाकी अदर कंट्रीज से कंपेयर कर रही हूँ. ठीक है. बट अगर मैं बोलूँ इंग्लैंड इज कोल्डेस्ट इन विंटर्स, तो मैं सिर्फ इंग्लैंड की बात कर रही हूँ ना, कि इंग्लैंड सर्दियों में बहुत ठंडा हो जाता है. मैं ये नहीं कह रही कि इंग्लैंड बाकी कंट्रीज से सबसे ज्यादा ठंडा है. ठीक है. तो जब हम इंग्लैंड को किसी से भी कंपेयर नहीं कर रहे, हम नॉर्मली कोल्डेस्ट बोल रहे हैं, द कोल्डेस्ट नहीं बोल रहे. Another example, my boss is most generous when we get a big order. ठीक है. जब हमें बड़ा ऑर्डर मिलता है तो मेरे जो बॉस हैं वो बहुत ही धनी बन जाते हैं. ठीक. बट अगर मैं कंपेयर करूं अपने बॉस को बाकी किसी से, तब मैं यहाँ पे बोलूंगी माय बॉस इज द मोस्ट जेनरस बॉस इन द वर्ल्ड. ठीक है. बिकॉज ही इज वेरी जेनरस ना. ठीक है. So not the most generous, because here we are comparing the boss behavior when he gets a big order with his behavior in other situations. Any questions? No. All good? Please read. There are some adjectives that have irregular forms, meaning the superlatives formed by adding the suffix good, the best, little, the least, but, the worst, far, the further, the farthest. अभी जिसने भी स्पीकिंग करी है प्लीज दोबारा मत करिएगा, बिकॉज आपकी आवाज बहुत हल्की आ रही थी. There are some adjectives that have irregular forms. Guys, मैंने आपको कल भी बताया था, good, better, best, ये irregular है बिकॉज इनके फॉर्म्स में er और est नहीं लगते. राइट. good, better, best, little, less, least, bad, worse, worst, far. फार की दो फॉर्म्स है, आप फर्दर, फर्देस्ट भी यूज कर सकते हैं, फार्दर, फर्देस्ट भी यूज कर सकते हैं. ओके. FUR भी यूज कर सकते हैं, FAR भी यूज कर सकते हैं. So guys, that is all about superlative adjectives. अगर आपको अभी भी कोई confusion है, feel free to ask, because from the next slide we have quiz. Come on, go ahead. No questions? Let's start with the quiz. Pick the correct option. He is the best soccer player in England, or he is the most good soccer player in England. Very easy.
Sajal, Raju, Mahipal, Usma, Devendra, Jaya. Incorrect response. Guys, अभी पीछे स्लाइड में हमने पढ़ा है बेड गुड की क्या फॉर्म्स है. Ajmol, please answer. Yeah, ma'am. He is the best soccer player in England. Yes, so we are saying he is the best soccer player in England. The most good नहीं है. Good, better, best. इसको कहीं लिख लीजिए क्योंकि आप लोगों का ये वाला माला जो है ना ये खाली है. तो प्लीज राइट इट डाउन समवेयर ताकि आप उसे देखें तो आपको याद आए. हाँ, गुड, बेटर, बेस्ट. अभी क्योंकि मैंने प्रीवियस स्लाइड में ये चीज बताई थी. इट्स इररेगुलर फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव गुड, बेटर, बेस्ट. कार्तिक, वेयर आर यू? और ये कौन सा टाइम है दीपाली और कार्तिक क्लास ज्वाइन करने का? नेक्स्ट स्लाइड. Pick the correct answer. Falling is the worst thing that could ever happen to a sprinter, or falling is the worst thing. Sprinter is someone who runs in a race. Anamika, please answer. Falling is the worst thing that could ever happen to a sprinter. Yes. Please, Anamika, understand the pronunciation. Worst नहीं है, worst. व का sound आएगा, worst. Okay, ma'am. Worst. Yes. ठीक है, R का भी sound नहीं आएगा, worst. Falling is the worst thing in the world that could happen to a sprinter. Obviously, कोई running कर रहा है और running करते करते वो गिर जाए, fall हो जाए, गिर जाए, right? तो सबसे बुरी चीज है. Worse is the second degree of adjective, that is comparative degree. Dipali, Athar, Milan, Paras, Sheetal, Faraz. आप लोगों को अभी बताया मैंने. Sprinter is a runner who runs in a marathon or a race. Any other questions from this slide? Let's move to the next one. Pick the correct answer. For me, he is the most fast man in the world, or he is the fastest man in the world. Bhupinder, please answer. Yes, sure. For me, he is the fastest man in the world. For me, he is the fastest man in the world. For example, we can say Milkha Singh. He is the fastest man in the world, or he was the fastest man in the world, right? Flying jet. So guys, please understand that here the most fast is wrong, because fast हमारा एक छोटा सा adjective है जिसके साथ er और est लगेगा, more, most नहीं लगेगा. Fast, faster, fastest. Jaya, back-to-back incorrect responses. Milan, you also making back-to-back incorrect responses. Sorry. Next, pick the correct option. Your son is the most cleverest kid I have ever met, or your son is the cleverest kid I have ever met. पारस, द कौन लगाएगा? अभी पीछे स्लाइड में पढ़ा भी है द, तब भी नहीं लग रहा. दीपक,
दीपक आप प्लीज क्लास में ज्वाइन किया करिए, क्योंकि आप आंसर तो देते नहीं है, तो आपका प्रो लर्नर होने का फायदा है नहीं, तो आप नॉन प्रो की तरह क्लास अटेंड किया करिए। दीपाली। मैम Yes, ma'am. Your son is the cleverest kid I have ever met. एवर नहीं, एवर, एवर, मुंह खोल के आर का Ever. साउंड नहीं आएगा। Okay, ma'am. Ever. Yes, वेरी ma'am. गुड, यस दीपाली। मैम जी मीरा। मैम in means clever we can use the cleverest and most clever both. तो मोस्ट के साथ क्लेवर होना चाहिए ना, क्लेवरेस्ट हो थोड़ी हो होना चाहिए। सॉरी मैम, हाँ या सॉरी गाइस अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हुआ करे तो पहले वेट किया करिए, फर्स्ट वी विल डिस्कस द आंसर एंड देन आफ्टर दैट वी विल डिस्कस द क्वेरीज। सो अगर यहाँ पे मोस्ट क्लेवर होता तब आपका आंसर ठीक होता, दोनों ही आंसर ठीक हो जाते, इसलिए वहां पे उन्होंने आपको कंफ्यूज करने के लिए मोस्ट क्लेवरेस्ट दिया है। योर सन इज द मोस्ट क्लेवर किड और द क्लेवरेस्ट किड आई हैव एवर मेट, नॉट द मोस्ट क्लेवरेस्ट। इसमें मोस्ट भी आ रहा है और EST भी आ रहा है, इनकरेक्ट। Okay. Next. Don't you think it's dash present you have ever received? The most valuable, the valuablest. Oh God. Suhana, Archana. Mahipal, Deepak. Karthik, please answer. Don't you think it's the most valuable present you have ever received? Yes, the most valuable present. So guys, valuable, इसमें दो syllables आ रहे हैं हमारे, इसलिए हम इसमें ER और EST नहीं ऐड करेंगे, बल्कि मोर मोस्ट ऐड करेंगे। तुम्हें नहीं लगता ये गिफ्ट सबसे ज्यादा वैल्यूएबल है जो तुमने अभी तक रिसीव किया है? I think yes, it is. It is said to be dash quiz in England, the trickiest, the most trickiest, the most trickiest. Very easy. Paras, the most valuable thing on earth is a mother. आपके आर्टिकल्स बिल्कुल ठीक नहीं है, आपने पहले तो ऑन अर्थ की जगह आपने इन द अर्थ लिखा है, उसके बाद इज मदर की जगह इज अ मदर की जगह आपने इज मदर लिखा है। तो आर्टिकल्स प्लीज ध्यान से पढ़िए दोबारा से और अपने आर्टिकल्स पे वर्क करिए। मंजू प्लीज आंसर। Yes, ma'am. First one, ma'am. It is said to be the trickiest quiz in England. Yes, England, sir. In England. So it is said to be the trickiest. Trickiest. 3 syllables हैं guys. तो first of all इसमें हम the most तो लगाएंगे नहीं, तो नीचे वाले जो the most वाले हैं उनको आप वैसे ही हटा दिए। सेकेंड वाला आया trickiest, तो ये चीज हमने बहुत क्लियरली पढ़ी थी एक्सप्लेनेशन स्लाइड में, जो भी वर्ड y पे एंड होता है वो I से चेंज हो जाता है, राइट? So trickiest, TRICKIEST. Bhupinder, Vishakha, Sohana, Deepak, Reddy, Anamika. Incorrect response. Next slide. Choose a correct answer. Lily is the happiest when she has a holiday, or Lily is happiest when she has a holiday. With the, without the. Very good. अजमोल, कार्तिक, दीपक, भूपेंद्र, साजल। गाइस हम किससे कंपेयर कर रहे हैं लिली को? पहले तो मुझे ये बताइए। मैम खुद से कर रहे हैं। तो खुद से कर रहे हैं हम, एग्जैक्टली। मीरा प्लीज आंसर। Lily is happiest when she has a holiday. Yes.
सो हम लिली को उसी से कंपेयर कर रहे हैं, हम किसी और इंसान से, किसी और चीज से उसे नहीं तोल रहे, कंपेयर कर रहे हैं. सो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग हैप्पीएस्ट विदाउट द. To understand this concept, please read this explanation slide again. With the or without the. Not this one. Not this one. Okay. Not this one. कहाँ चली गई वाली slide? Third. With comparative, no. No. Even Necessary. one more. Big to biggest, no. This one. No, it's just these are the words जिनमें दोनों use हो सकते हैं. This this one. So guys, when we compare one thing with itself, we do not use the. So यहाँ पे हम लिली को उसी से कंपेयर कर रहे थे. फॉर एग्जाम्पल, इंग्लैंड इज द कोल्डेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, बट इंग्लैंड इज कोल्डेस्ट इन विंटर. My boss is most generous when we get a big order. Another example, Lily is happiest when she has holidays. Pick the correct option. She has always been most efficient of all secretaries, or she has always been the most efficient of all my secretaries. Yes. After Meera, Nemi-chan, please answer. She has always been the most efficient of all. Yes, guys, here we are using the most efficient because we are comparing her to other secretaries. ठीक है, तो मैंने अब तक जितनी भी सेक्रेटरीज रखी है 2, 3, 4, उनमें से ये सबसे ज्यादा एफिशिएंट है. ओके, सो शी इज द मोस्ट एफिशिएंट, और शी हैज ऑलवेज बीन द मोस्ट एफिशिएंट ऑफ ऑल माय सेक्रेटरीज. सो वी आर कंपेयरिंग. सो यहाँ पे द आएगा. He lives dash out of all of us, the furthest further. Raghavendra, please answer. He lives the furthest out of us. Yes, आपकी आवाज. He lives the furthest out of all of us. So guys, यहाँ मैं उसको बाकी अपने दोस्तों से कंपेयर कर रही हूँ कि मेरा जो ये दोस्त है ना, ये सबसे दूर रहता है हम सब में से. तो सब में का मतलब है 2 से ज्यादा, ऑब्वियसली. तो यहाँ पे कम फर्दर जब होता है, जब हम 2 को कंपेयर करते हैं, उसको और खुद को जब मैं कंपेयर करती तब फर्दर आता. He lives further than I. बट यहाँ पे मैं अपने और बाकी दोस्तों से उसे कंपेयर कर रही हूँ. सो दैट्स व्हाई द फर्देस्ट. Next, which of the 3 supermarkets do you think has dash range of products, the most wide, wider, the widest? Rahul, please answer. Yes, ma'am. Which of the 3 supermarkets do you think has the widest range of products? Yes. So guys, for example, आपके सामने 3 सुपरमार्केट्स हैं. तो आप किसी से पूछ रहे हैं कि इसमें इन तीनों सुपरमार्केट्स में से सबसे ज्यादा वाइडेस्ट रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स कहाँ पर है. ठीक है, सो आप
आपको जैसे जिसने भी आपसे जिससे भी पूछा है वो आपको बता देगा कि यार ये वाली मार्केट बेस्ट है. फॉर एग्जाम्पल बिग बाजार सुपरमार्केट है, तो इसमें आप जाइए और यहाँ पे आपको वाइडेस्ट रेंज मिल जाएगी. सो द वाइडेस्ट रेंज, ठीक है. सो वाइडेस्ट का मतलब क्या है? ऑफ ग्रेट और मोर देन एवरेज विड्थ, ठीक है. सो द वाइडेस्ट इज द राइट आंसर. द मोस्ट वाइड हम नहीं यूज करेंगे बिकॉज उसमें सिर्फ एक ही सिलेबल है, वाइड, ठीक है. वाइडर नहीं होगा बिकॉज 2 सुपरमार्केट्स नहीं है, 3 सुपरमार्केट्स है. 2 सुपरमार्केट्स होती तो वाइडर आता, इसलिए द वाइडेस्ट आया है. Next slide. I chose this car as my favorite because it's dash all of the ones I have driven. The fastest of, more faster as, more faster than. Very easy. सचिन बार बार इनकरेक्ट रिस्पॉन्स क्यों हो रहा है आपका? हम कंपैरेटिव डिग्री तो पढ़ ही नहीं रहे, तो आप लोगों को इतना दिमाग चलाना चाहिए कि द टॉपिक इज सुपरलेटिव डिग्री, तो मेरा आंसर कंपैरेटिव डिग्री क्यों होगा? दीपक, सचिन, सुभोश्री, सौरभ, योगिता, कितना ही मेहनत कर लो आप, कुछ आप लोगों के साथ इनकरेक्ट रिस्पॉन्स ही आना है. ओशन मॉल हैज द वाइडेस्ट रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स. एस भी लगाना है. Oh God, what is the role? Victor, there is a vital role of syllables, because if there is only one syllable in the adjective, then you are supposed to add er or est in the adjective, and if there are more than 2 or more than 2, then you'll have to put more and most. That's why I always ask you guys to join on time. First explanation side में हमने यही पढ़ा था. She wakes up dash in her family. The earlier, the earliest. पीछे वाली स्लाइड डिस्कस ही नहीं की. इस पहले पीछे वाली स्लाइड डिस्कस करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट. Sachin, please answer for this one, 17th slide. I chose this car as my favorite because it's the fastest of all of the ones I have driven. Yes, and which one did you choose? Third one, and I was like more के साथ faster भी यूज हो रहा है. वाह सचिन, आज कमाल कर दिया. फास्ट के साथ मोर और मोस्ट नहीं लगेगा, गार्ड बांध लीजिए. दूसरी बात, मोर के साथ ER फॉर्म, मतलब दो चीजें कैसे? I'm also human, ma'am. It's third mistake. I was like, wow. Why? This is why what I'm saying. Why you are making mistake? Human की तो बात ही नहीं हो रही यहाँ पे. Okay, next we have Sajil. Sajil, please answer. She wakes up the earliest in her family. Yes, she. Now we are comparing her. For example, my mother. She wakes up the earliest in our family. हमारी फैमिली में मेरी मम्मी सबसे पहले उठती है, तो मैं उनको किससे कंपेयर कर रही हूँ? मेरे बाकी फैमिली मेंबर्स से. सो द अर्लीस्ट. अर्लियर यहाँ पे जब होता, जब मैं दो लोगों को कंपेयर करती. ठीक है. ये कौन है और ये कहाँ से आते हैं स्टूडेंट्स? Moving to the next slide. Which juice is dash delicious? Apple, orange, or raspberry? More, the most. Now, Sachin, you are right. You are correct. Answer is correct here. It was just by mistake. It's not like I always give right answer. Sometimes I also have to do mistake. To learn something. Aura, please answer. The second one, ma'am. The most. Yes. Which And juice Aura? is the most delicious? Apple, orange, or raspberry? Raspberry. So, Saurabh, आपकी problem solve हो गई? The problem you were having? No, ma'am. Okay, but I actually conveyed your message to the team. I don't know why they didn't get back to you. Ma'am, first of all, there is no option, live option, and There is no option.
or laptop, ma'am. No, The ma'am, there is live no live option. I laptop. have also tried I think, and let me tell you why. Maybe this app is made for people to use it on mobile phone. Maybe. no, I'm just saying yeah, because all of the students here, you can see they are attending the session and they are attending on their mobile phone because it is a convenient thing that everyone has. So that's why I believe they made this like this, because हो सकता है ये मोबाइल के ही अकॉर्डिंग बनाई गई हो ऐप और इसलिए यहाँ पे लैपटॉप में लाइव का ऑप्शन नहीं आ रहा. They said, ma'am, they are working on it, ma'am. exactly. I also asked this the same question that how can we log in the laptop? So they said we are working on it. Means this app has been featured of laptop. No. And if he wants to join, then he can join by Zoom. By Zoom, it's possible, and Zoom? by Zoom. Sachin? Yes, Zoom. Zoom. Okay. But you can't see the quizzes on Zoom. And Sachin, I think but today is not your good day, so so try. no, that's nothing. I never mind. That's right. And Hello Learner Live. If you can download Hello Learner Live, try it by that. I believe I have only 15 minutes to be completed this all the questions, so I think move ahead. We should move ahead. What is syllable? So guys, syllable please समझिए. Syllable बहुत आसान है समझना. अगर आप इसको समझ जाएंगे तो आपको आसानी हो जाएगी, कोई मुश्किल नहीं है. So a syllable is a part of, you can say, is a word part and the basic unit of English rhythm. English words can have 1, 2, 3 or even more syllables. In the word, for example, drive, way, there are 2 syllables. Okay? Drive, then way. तो guys, syllables को हम पहचाने कैसे कि syllables कहाँ से आता है? Syllables हमारे जो unit होते हैं, they always come. ये कौन है भाई? Yes, so they have unit of pronunciation having one vowel sound or without surrounding consonants, forming the whole or a part of a word. For example, there are 2 syllables in water. तो water में अगर आप देखेंगे हमारे पास 2 vowel sounds है surrounded by consonants. For example, W consonant है, फिर आया A vowel है, T consonant है, E vowel है, R consonant है. So जहां पे भी जिस भी words में हमारे vowels होते हैं surrounded by consonants, वो हमारे syllables होते हैं. Water, तो water में 2 syllables है. Fast में सिर्फ एक vowel word है, that is A. तो word carry alphabet है, 1 vowel है, that is 1 syllable. फिर आते हैं और किसी वर्ड पे. फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने बताया था ड्राइव. ब्यूटीफुल मैम. ड्राइव वे, DRIVE. कोई कुछ बोल रहा है? Yeah, I was saying, what about encyclopedia? How many? अब आते हैं syllable पे. Syllable अपने आप में उसमें कितने syllables हैं? There are 3 syllables in syllable. SYL LA syllable. Okay, अब समझ में आ गया? क्या पढ़े? Encyclopedia. What are syllables, right? So please अब इस चीज में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए कि मैम syllables क्या है? Encyclopedia 5 syllables. Encyclopedia. There should be 6 syllables. Yes, ma'am, 6. Great. Okay. Any other questions, guys? और किसी word में पूछना है? So let's quickly move to the next slide. We just have 14 minutes. The book is dash serious, one on the topic of female infanticide.
Most, the most, the more. Victor, it is permissible for iPhone as well. I have iPhone, my brother has iPhone, and I've tried using the app on both phones. So it is permissible. ऐसा कुछ नहीं है that it is made only for Android users. So Voshri, please answer. The book is the most serious one on the topic of female infanticide. Yasmin is saying not jhum barabar. Next, choose the correct response. That suitcase is the lightest, or that suitcase is lightest, with the, without the. मैम शो नहीं कर रहा. कैसे शो नहीं कर रहा प्रिया? पता नहीं मैम. I don't know, but शो नहीं कर रहा. Try to refresh it. Try to refresh or try to check your connection, like connect again. Okay, ma'am. Okay, so Taru, please answer. The suitcase is lightest. Yes, because we are not comparing suitcase to any other suitcase, ना. The lightest तब आएगा जब मैं उसे compare करूंगी. For example, मैं बोलूं कि suitcase के कौन-कौन से brands होते हैं? VIP. American. तो अगर मैं उसे compare करूं, Sky bag से lightest जो है VIP का bag है. So I am comparing, but यहाँ मैं compare ही नहीं कर रही हूँ. उसे मैं सिर्फ बोल रही हूँ the suitcase is lightest. ये सबसे मतलब ये हल्का है बहुत. Right? And guys, पीछे slide भी मैं आपको describe करना भूल गई. The book is the most serious one on the topic of female infanticide. Guys, what is female infanticide? When we kill a baby inside the womb of a mother, that is called infanticide. तो suicide से ये word बना है infanticide. Infant होता है बच्चा, बहुत छोटा बच्चा, जैसे 1 month तक आप लगा लीजिए, उसे इन्फेंट बोलते हैं हम, तो उसे हम इन्फेंटिसाइड बोलते हैं. सो ये बुक सबसे ज्यादा सीरियस है इन्फेंटिसाइड, फीमेल इन्फेंटिसाइड टॉपिक पर. इट्स कोरियन लैंग्वेज. नॉर्थ कोरिया. किसकी शादी हो रही है? should join the couple show. Next slide. Pick the correct answer. I wake up the earliest on Mondays as I have yoga classes, or I wake up earliest on Mondays as I have yoga classes. Vishakha, please answer. I cannot see the slide, ma'am. Okay. But I think I wake up earlier when earliest. Yoga I classes. wake up earliest on Mondays as I have yoga classes. Again, we are not comparing I to any other person. That's why earliest, not the earliest. Why are you wearing such dash clothes? Go put on something new. Old, older, oldest. Wow. Nice joke. You should join the competition. Very easy syllable, ma'am. Thank you. You're welcome, Victor. Next we have Yogita. Please answer. Ma'am, what do you call paneer in English? Paneer को tofu paneer होता है, मतलब उसमें बिल्कुल वो कम होता है. I think cottage. Ma'am, one word.
Cottage. No, it's not cottage. Cottage is something that having salt, and what we use in our dishes, it's without salt. So there is nothing any word. I have also discussed this That's cottage what I'm saying. cheese. Paneer is paneer. Yeah, means Cottage cheese मैंने काफी जगह देखा है. When you go to a restaurants, there in their menu it is written cottage cheese, tofu paneer. Yeah. So वहाँ cottage लिखा होता है. That's why it came to my mind. But paneer is paneer. Okay. So you already Paneer is knew paneer that. means English is also paneer. That's why ring a bell in my cottage. English is very confusing. What do we call in English? Words like THOUGH दो होता है, THOUGH tough होता है, COUGH cough होता है. क्यों? No, ma'am. What I'm asking, what to say paneer in English? Any one word. Ma'am, can I say one thing, ma'am? For example, idli is there in South India only. It's not there anywhere in the world. Means they eat, but its origin is from South India. So we cannot name it with other name. Like idli means idli only, whole in all over the world. So if paneer, if its origin from India only, then its name is paneer only. Even though some people call it with other names, but it's, for example, pizza. Pizza, its origin is in Italy, I think. Even in India also we call it pizza, and some other countries also. Yeah. Some origin means some foods are from countries, so we don't change their names. Yeah. For example, idli, dosa means like batashe pani. Exactly. Golgappe, another state. Guys, can we move ahead? So root word is cheese. Okay, ma'am. Yeah, go ahead. All right. Ajmol, please answer. Yeah, ma'am. Why are you wearing such old clothes? Go put on something new. Guys, here we are not comparing, or we are not saying we are not using comparative or superlative degree of adjective. We are using a base form or the positive degree, which is old. Why are you wearing such old clothes? तुमने इतने पुराने कपड़े क्यों पहन रखे हैं? Go put on something new. जाओ नए कपड़े पहनो. Okay. Anamalia, thank you for wishing me that I am about to complete, and it's not belated yet. Have you heard the dash news? Latest, newest. Means you are saying that today is your birthday, ma'am? No, it's not. Who said? About to complete, you said. She's saying about to complete 1 year. Because I joined Hello English in March, I remember, after my birthday. So yes, I am about to complete. Answer. Anamika, please answer. Have you heard the latest news? Have you heard the latest news? Latest का मतलब क्या है? सबसे ताजी, सबसे ताजी. So the latest news. Absolute adjectives. पता नहीं किसकी शादी हो रही है. Please read. Take a look at these very short sentences. He's tall. He's dead. They both contain adjectives tall and dead. Tall can be used in comparative sentences. Example, he is taller than I am. Dead cannot be used in comparative sentences. He is deader than I am. You are either dead or not. You cannot be deader or more dead than someone. Dead is therefore an example of an absolute adjective. Adjectives that cannot take a comparative or superlative form. Another example of an absolute adjective is unique because it means one of a kind, and therefore it cannot be more unique or most unique than it's either unique or isn't. Similarly, perfect, essential, and healthy can also be termed as absolute adjectives. Students, allow me one moment. I need to change the room. There is so much noise. I cannot hear anything.
So battle between Ukraine and Russia is still going on or stop it? They are just enjoying their fight. But it's still going on. So far still going on. Yeah, they are just enjoying and civilians are suffering. Simple. We are not enjoying, but we also witness, but because of market, share market is going day to day downside. Yeah. It's very dangerous for me. All right, that guys. is- So guys, take a look at these very short sentences. He is tall. He's dead. They both contain adjectives tall and dead. Tall can be used in comparative degrees. For example, I can say my brother is taller than I am, or he is taller than you, right? But dead cannot be used in comparative sentences. If you see a person who is dead, can you compare it to someone else? No. So dead cannot be compared. So you are either dead or not. You cannot deader or more dead than someone or deadest, right? Another example of an absolute adjective is unique. Again, neither you can compare nor you can use a superlative degree for an adjective unique. Okay, so unique means one of a kind. And please close the door. Yeah, so it can not be more unique than something. It's either unique or it is not unique. Similarly, perfect. Perfect is something without any error, right? So essential and healthy can also be termed as absolute adjectives. So in very simple way, we can say absolute adjectives are the adjectives जिनकी second or third form नहीं होती. जैसे कि dead, perfect, essential, healthy, for example, right? I have one more example. Born. Extinct also. Born. Born. Yeah, it's an absolute adjective. Okay, born can be used as verb and an adjective as well, right? So guys, if you want to know about more absolute, because you don't have time, आप लोग search कर सकते हैं absolute adjectives online. आपको list मिल जाएगी and then you will know कि भाई इन adjectives की क्या है, कोई भी forms नहीं है. Alive, जैसे अगर dead है तो alive भी है. Ancient, पुराना. अब हम इसको more ancient नहीं कर सकते और पुराना. No. Awful, basic, enormous.